our heartfelt gratitude to the dignitaries present here with us today. Our honorable guest, Shri Ashok Vyas, retired District and Sessions Judge, Srimati Suman Saharan, District and Sessions Judge, Shri Ravikant Soni, Deputy Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Registrar Modi University, Dean Administration, Dean School of Law, Dr. Hina Patoli, Deans of all schools, Principal Modi School, Principal SEFS, GMs of all the services, faculty members, virtuous participants and students. We welcome you all on behalf of School of Law. Our lives begin to end the day we become silent about the things that matter. Quoting Dr. Martin Luther King, we now commence the debate competition, the name game India versus Bharat, organized by School of Law. Saraswati Mahabhage Vidye Kamal Lochane Vidya Rupe Vishalakshi Vidyam Dehi Namostate. We shall commence this event with blessings of Ma Sharda. We call upon students of School of Law for Saraswati Vandana. या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभहति देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा. Now, we request the choir to proceed with the Kulgeet. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें. निर्माणों के पावन युग में मानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है. जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें. निर्माणों के पावन युग में शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है. शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, यदि नैतिक आधार नहीं है. कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें. निर्माणों के पावन युग में आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है. प्राणी का उपकार नहीं है, प्राणी का उपकार नहीं है. मौलिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें,
वसुधा का कल्याण न भूलें, निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में। We now request Madam Dean School of Law, Dr. Hina Patoli, to escort our dignitaries on the stage. Thank you, ma'am. I request Madam Dean School of Law, Dr. Hina Patoli, for her inaugural address. Namaskar everyone. A warm welcome to our distinguished guest, Honorable Shri Ashok Vyasji, retired District and Sessions Judge, Honorable Shrimati Suman Saharan, District and Sessions Judge, Special Judge Court, Poxo, Sikar, Honorable Shri Ravikant Soni, Deputy Secretary, Senior Civil Judge, Ralsa, Jaipur. I welcome my senior colleagues, fellow colleagues, my faculties and my dear students, especially the little ones from the school. I hope this session will be the one where you will learn and you will also enjoy. For some time now, we have been talking about whether our country has to be named, renamed in fact. Should it be India? Should we continue with India? Or should we change it to Bharat? Or the other aspect or the other side of it is like we already have that name in the constitution, so there is no need to change. So you must be hearing it for quite some time. Okay? So we thought it was apt to bring it to the discussion forum where our students will argue for and against the topic. The name game, India versus Bharat. So let me just brief you. This debate is Oxford-style debate, wherein we are having two parties, and the speakers, three speakers will be there from both the sides, and they will present their arguments for and against the motion. And the audience here, it's not only for you to hear, you can, after they are done with their arguments, you can make your point, you can ask a question, you can give your opinion, anybody in the audience. And for the students who will ask the best question or who will make a very good opinion, you'll share your thoughts, we have a surprise. So I hope you have a nice time with us together in the law school. Thank you. Thank you, ma'am. To introduce our dignitaries with our audience, among us we have Shri Ashok Vyas sir. He is a retired district and sessions judge and also retired permanent Lok Adalat, Sikar, Rajasthan. In his service, he had a remarkable journey from being a civil judge to a special judge in women atrocities, special judge NDPS, special judge MACT, special secretary law in secretariat. Post-retirement, he also served as the chairman of Public Utility Service in Sikar.
He has also served as a law faculty in University of Nagaur and Kotputli and has also served as Tehsildar in Jodhpur. It is evident that Sir Vyas has gained immense knowledge and experience in his journey of more than 4 decades, and we are delighted to have you here with us, sir. Next we have Srimati Suman Saharan. She is currently serving as District and Sessions Judge, Special Judge POCSO 1 in Sikar. She joined Rajasthan Judicial Services in 2002. She has served in Jaipur, Sri Mahavirji, Karoli, Sikar, Jhunjhunu, Tonk. Srimati Saharan has a diverse experience in both civil and criminal field of law. She has also served as Secretary in District Legal Services Authority. We are honored with your presence, ma'am. Lastly, we have Sri Ravikant Soni. He hails from Sujangarh, Churu. He was in advocacy for years. Thereafter, he joined Judicial Services in 2013. He is presently Deputy Secretary in Rajasthan State Legal Services Authority. We are delighted with your presence, sir. Now, we would request the event coordinator, Dr. Navna Singh, Assistant Professor, School of Law, to please come up on the stage to welcome our dignitaries and present a token of honor. Thank you so much, ma'am. As we all know, our country is currently facing a controversy regarding its name, that is India or Bharat. We have 2 teams here with us today, Team India and Team Bharat. Now, we'd like to call the moderator of the debate, Dr. Pooja Jain, Assistant Professor, School of Law, to take her respective seat. We would like to invite both the teams of debate to take their respective seats for the debate. General guidelines of the debate competition. Each team has 2 speakers. Each speaker has been allotted 5 minutes. After the completion of 5 minutes, there will be a bell ringing. After completion of speech by all the 4 speakers, there will be a rebuttal round in which firstly, Team Bharat will ask 3 questions from the opponents, and thereafter the same chance of 3 questions will be given to the Team India. For the reference of judges, Sheet 1 is for speakers' evaluation of both the teams. I repeat, Sheet 1 is for speakers' evaluation of both the teams. Sheet 2 is for rebuttal round evaluation, which will evaluate question and answers by both the teams. Sheet 1 is for speakers' evaluation and Sheet 2 is for rebuttal round evaluation. Open house session is not the part of competition. It is an interactive session with the audience. Now, we hand over the stage to the moderator. Thank you. Namaskar everyone. I, Dr. Pooja Jain, Assistant Professor, School of Law, welcome all of you to this intriguing debate about what we should call our country. Today we are here to discuss something as seemingly simple as the name of our beloved nation. But as we have come to realize, simplicity often holds more depth than we initially think. Shakespeare once pondered, what's in a name? Well, it turns out a lot can be. Today we find ourselves delving into that very question as we traverse from India, that is Bharat, to India versus Bharat. Our discussion today revolves around the power of words, battle of emotions, when history is unraveled,
unexpected revelations emerge, things we might never have imagined before today. In this courtroom of ideas, we won't hear order, order. No adjournments, no next hearing dates, no tangible evidences, and not proving any beyond reasonable doubts. Yet I want to remind everyone that we should leave no stone unturned in ensuring the future of our nation's law, because opportunities to suggest a name of our country don't come to everyone. After 75 years gaining of independence. But the question remains, do we really need this? Is this the need of the hour? Is this a policy or a propaganda? Well, the answer lies in the eloquent arguments of our debaters and the guidance of our three distinguished guests. Whatever the decision may be, one thing is certain, and that is the unshakable unity of this nation. Times have changed, and it now seems that a name carries profound significance. So fasten your seatbelts, because we are in a linguistic adventure where we will explore not just the letters and sounds, facts and documents, but the emotions and history intervened with our nation's identity. Let's dive into this engaging discussion and discover whether a name can truly shape the destiny of a nation. Let the debate begin. I would now like to call upon our first speaker, Ms. Tanishka from the team BHARAT. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा. Namaskar, esteemed judges, my fellow debaters, and the audience present here. Today, I stand before you in support of the motion that India should officially be recognized as Bharat. This debate isn't just about semantics. It's about recognizing the historical, cultural, and constitutional importance behind the name Bharat. Let us delve into the rich history and constitutional significance behind this ancient name. First and foremost, the name Bharat carries with it centuries of historical and cultural significance. The name Bharat is not a foreign imposition, but rather an indigenous one. As it has been mentioned in many ancient literatures like Puranas and Vishnu Puranas, which characterize Bharat as a land between the sea and snowy mountains, and the land of works, that is Karma Bhumi. This term also finds its origin in the Indian epic, that is Mahabharata, one of the most valuable texts in Indian literature. In this text, there is a mention of a legendary king named Bharata, and the land that he ruled became Bharat or Bharatvarsha. This multi-dimensional understanding of Bharat, encompassing both geographical and cultural aspects, define Bharat as our essence of our civilization. Secondly, I would like to delve upon the constitutional roots related to the term Bharat. As per the Constitution of India, the very document that guides our nation, it has acknowledged our beloved nation under Article 1, which is India, that is Bharat. It has given the term Bharat a second place in terms of India. And that's not the place of Bharat which our founding fathers of our constitution has visioned. Many freedom fighters, activists, drafters of our constitution has visioned Bharat to take the primary place and not the second one. So in order to support my notion, I would like to quote the eminent personality statements who visioned Bharat, like Kamla Pati Tripathi, freedom fighter, our former railway minister, said that our country has lost everything during its 1,000 years of slavery. And if Bharat will be the name of our country, then it will demark our country as free, and it will regain its inner consciousness, which had been so far lost in a sort of sleep. Then I would like to quote Seth Govindas, an esteemed Indian activist, who pointed out that Bharat finds its place in our ancient texts and signifies connection to our rich past and cultural ethos. And last, I would like to mention Bipin Chandra Pal, Indian writer and orator, who said that he saw Bharatvarsha,
a true indigenous name of India, as it will promote unity and honor our cultural legacy. And as we look into the battle of our freedom led by Mahatma Gandhi, there always had a crying of slogan which was Bharat Mata Ki Jai, which deeply resonates that our struggle of independence was rooted in the essence of Bharat as a cultural concept. So, it's vital to note that this transition reclaims our historical legacy, reinforces our constitutional ethos, and represents a revival of our culture. Thank you. Now, I would like to hand over the mic to my co-speaker, who will be addressing further that why India should be recognized as Bharat. Thank you, Tanishka. Our second speaker, Ms. Mahima Saraswat from the team Bharat. Thank you, ma'am. Namaskar to the esteemed judges, dignitaries, and the very special audience. It is really a pleasure for me today to speak on this debate, the name game, India versus Bharat, and I will be addressing in the favor of the motion. A rose is a rose, is a rose, is a rose. This magnanimous phrase means something is what it is, regardless of how you call it, you rename it, or you name it. That's why we were Bharat, we are Bharat, and we will be Bharat. I really don't think so. I really don't think we are renaming anything, but in real sense, we are just bringing back our old self. Yes, and the word Bharat itself signifies the rich historical culture of our nation. The acknowledgement of Bharatvarsham was always special in the word. This is the reason why our nation was always a center of attraction for the whole world. Now, I affirm undoubtedly that all of a sudden, when Britishers entered, they completely abolished the name Bharat and gave us a new terminology that we all know, India. That too for their own convenience. This convenience was such a massive attack on our country's identity, on our unity and our integrity. So, the Akhand Bharat was no more Akhand. Even the Bharat was not Bharat by its name or either by its ideology. We got so much shattered during the time of colonization that even today, after the 75 years of independence, we are just following the ideologies of Britishers by having the name Bharat, by having the name India for our nation. The House should know that bringing back the true name of our country is the essential step of decolonization, such as Ceylon to Sri Lanka, Burma to Myanmar. So I leave this ball in the ground of the audience to think it's not a time or it is a time to change our country's name, Bharat again. Because this is our true identity before the colonization era. I'm not disrespecting the word India, because for me, this name game is not actually a name game. Both the words, India and Bharat, are having their own recognition, are having their own identity. Yes, I agree. During the time of independence, our country, our nation was in the need of recognition at international level just because of its name. But today, in 21st century, when our nation is having its 5th largest GDP, such a strong international relations, and the development of our country in the past few decades is speechless. So, don't you think so? Now it's not all about it's not about name. In past, India was in need of the world. But today, Bharat is the need of the world. We all should know, and we should be proud even, that Bharat is among the top few nations of the world who just don't get recognized by its name, but by its development. The quality of the things and the return this nation gives to this world is recognized very well by everyone. Now, when our country is in the pool of cultural revolution, so why can't we bring back our real name as Bharat and can recall it again as Bharat Bhagya Vidhata in true sense?
Now I will be dealing with few arguments that exist against the adopting name Bharat. Number one is the word Bharat. As we all know, our country is one of the secular country in the nation, in the world. So why can't we adopt a name? Why we should adopt a name that signifies a Hindu origin? Because as we all know, the word Bharat originates from Puranas and Vedas. But we all know that the words like Zilla, Tughlaq, Tehsil, all of them having an origin from Urdu. Here, I want to make a very difference between religion and language. Urdu and Hindi are both the languages, are official languages of our country. So, and that is also very well supported by our Indian Constitution. So we should make a difference. We should understand the difference between the language and the religion. Both the languages signifies our diversity and make us unite nation. So I don't think there should be a confusion between a language and a religion. Secondly, I would like to conclude here that गुलामी की तोड़ बेड़ी फैला रही है मानस पंख विश्व सजग हो जाओ सुन बज रहा भारती जय शंख बज रहा भारती जय शंख लेट्स मेक इट भारत अर्थात इंडिया at the place of India, that is Bharat. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Mahima. After hearing the team Bharat, don't you think Bharat sounds more exotic, more ethnic, more indigenous? But this isn't about sounds better, India or Bharat. It's about identity, heritage, and our sense of belonging. It is about the past, the present, and the future. So let's keep the debates lively. Let the arguments flow. With this note, I would like to call upon our first speaker from the team India, Ms. Kanchan Rathore. मैं राष्ट्र हूं, कोई धर्म नहीं, मुझे भाषा भेद में ना बांटा जाए। इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं, ये राष्ट्र की नस है, कृपया इस नस को ना काटा जाए। भारत में कुछ गलत नहीं, बट इंडिया दैट इज भारत, ये तो हमारा संविधान भी कहता है ना। क्यों भाषा भेद को बढ़ावा दे, हर इंडियन में भी तो भारतीय रहता है ना, हर इंडियन में भी भारतीय रहता है। A very good afternoon to all the excellencies, respected chair and my panel of opposition. My name is Kanchan Rathore, and today my team and I stand firmly against the motion in the name game Bharat versus India. Firstly, to be very clear and precise, our goal is not to oppose the word Bharat, but to protect the exclusion of the word India. This contrast is very vital and deeply rooted in our nation's identity. I am very sure, as a responsible citizen of our nation, all of us have a basic knowledge of our constitution. Do you know what our constitution says when it comes to the nation's name? In our very own constitution, the document that forms the bedrock of our nation's principle, we find an interesting fact that in part 1, article 1 of the constitution, it has been clearly mentioned that India, that is Bharat, shall be a union of states. Simultaneously, if we examine the same constitution written in Hindi, that is Bharatiya Samvidhan, it equivocally declares Bharat अर्थात India, राज्यों का संघ होगा. And this brings a light on a very crucial point. Our constitution officially recognizes both Hindi and English as the official names of a country, that is Bharat and India. Now, if we take the significant examples using the languages which we are using, let us take the example of passport. When we examine our passport, the document that signifies our identity on a global stage, it boldly states Republic of India. However, it also features the term Bharatiya Ganrajya alongside it. This dual nomenclature in an official document further exemplifies the harmonious coexistence of India and Bharat. Now, if we take the example of armed forces, our armed forces, the guardian of the nation, our armed forces are also known as Indian Army, Indian Air Force, and Indian Navy. But when we shift it to Hindi, we proudly refer them as Bharatiya Thal Sena, Bharatiya Vayu Sena, and Bharatiya Jal Sena. This consistent use of English and Hindi terminology
underscores the inclusivity of a linguistic heritage. It's not a passport or armed forces, but numerous official communications and government documents maintain this duality. Whether it's the Reserve Bank of India, that is Bharatiya Reserve Bank, or the Supreme Court of India, that is Bharatiya Uchchatam Nyayalaya, both the languages share an equal footing. This coexistence of India and Bharat is not a conflict, but a celebration of a national's linguistic diversity and a unity in diversity. Do you know this question of changing the names of a nation is not a recent or new? The two significant legal pronouncements just 8 years ago, in 2016, our Chief Justice of India, T.S. Thakur, remarked, "You want to call it Bharat? Go ahead, call it Bharat. You want to call it India? Call it India." The statement exemplifies the judicial recognition that Bharat and India are valid terms for a nation, and it's a matter of a personal choice and diversity. And subsequently, in 4 years ago, in 2020, a similar petition resurfaced that the Chief Justice of India, S.A. Bobde, retaliated that Bharat and India, both names are explicitly given in a constitution. Foremostly, I am so keen to correct this up, that India is never against Bharat and not the Bharat is against India. This debate doesn't hold a significant base itself. And as a developing nation, we have more important issues to resolve up, rather than just discussing what is needed and what is not. As it is well said, what is in the name? And now, I request to pass the baton to our next presenter to elaborate the topic in a better way. Thank you. Thank you, Kanchan. Whether we choose to change or stay the same is definitely a debatable issue. But one thing that remains paramount is the preservation of this nation's integrity. Now I welcome our second speaker from the team India, Ms. Arjav Rajvi. Good afternoon, everyone, all the esteemed judges, audience, and my panel of opposition. What I would like to start by, nothing in me is original. Everything that I've become is combined effort of everyone that I've ever known. Identity, that is identity. For the Greeks, we were the land which were beyond the river Indus. We were the people, Indoi, who were living beyond the river Indus. For the Persians, they called this land Hind or Hindustan. They referred to us in many ways. We were called Aryavarta, we were called Mehula, we were called Jambudweep. We were also called Bharat, and when the Europeans used these as the sources, Britishers gave it as the official name, India. So, India was not given to us or chosen to us. India was taken by the many cultural or historical factors that shaped us into becoming what we are today. Whereas when we gained independence in 1947, we finally got the opportunity to choose what do we like to call ourselves, call our nation, and that is the time when we chose to call it Bharat. So India and Bharat are used synonymously for each other. No one is superior than the other. What do we say when we say Jai Hind or Jai Bharat? We say Jai Bharat, we don't say Jai India. So we refer it on the equal footing. Even in the national anthem when we sing Bharat Bhagya Vidata. We don't sing India Bhagya Vidata. So I don't understand why the panel of opposition thinks that both the names are not on equal footing. Moreover, if we were to change the name formally to Bharat, it would not only create chaos, it would also lead to loss of global recognition. The name Bharat or India, both are important. India is the English name that is used when we are recognized globally. It helps in global communication, it helps in global diplomacy. It is also the name that is used in the multilateral forces, in the bilateral relations, and all the other negotiations, treaties that are happening. But simultaneously, we use the name Bharat. Recently, in the joint statement that was given by India and Greece, it was written, the President of India, but it was also written, Bharat Ganatantra Rashtrapati. So, agar hum international documents mein, we're already mentioning it, I don't understand what is the need to change.
Moreover, let's take the example of Japan. Japan's official name is Japong, but they changed it to Japan. With the advent of globalization, with the advent in trade and commerce, economy flourished. They understood that they had to change it. Therefore, they took the initiative towards modernization and changed their name from Nepal to Japan. India does not need to do it. We already have it. Furthermore, when we proceed, I'd like to mention that you said that India or Bharat both are present. And as Tanishka correctly said, that it is given second place. But I strongly oppose this. It is not given second place. It is just that English is the second most spoken language in the world. So what we have to realize is that I don't know. Okay, as you correctly said, that English is the second, Bharat is given the second place while we give India the preference, but it is not. English is the most spoken language in the world. That is why it is widely used. Okay? So India is something that everybody can relate to, everybody can talk about. So saying Bharat or India gives us equal thing. Let's take an example of a house. The breadwinner of the house comes home and he sees that the house is in need of food, clothing, medicine, etc. And there is also need to change the nameplate of the house. What would he do? Anyone? He'll provide the basic needs that is important for the house, or will he change the nameplate? That is exactly what I'm trying to prove here. अभी हमारे देश को खाने की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, ना कि इंडिया को भारत करने की, जिसकी अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट है 14,000 करोड़. और ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, क्योंकि एनसीआरबी के अकॉर्डिंग छोटे से शहर इलाहाबाद को अगर प्रयागराज करने के लिए 300 करोड़ लग सकते हैं, तो हमारे देश को बदलने के लिए 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा लग सकते हैं. So what we need to focus is that financial condition of our country, even though we're the third largest economy in the world, even though we're the third largest economy in the world, this debate is not about choosing one name or the other. It is about the consequences that you all 136 crore India's people would face. Thank you. Thank you, Arjav. It seems like this naming ceremony is overburdening our pockets. But is it above our pride? Is it above our sentiments or emotions? Can this be the only reason of opposing by changing name India to Bharat or Bharat to India? The question is yet not solved. Who shall prevail? If you ask me at this moment, I will definitely say, let the best argument prevail. What will happen if we mix both the name? Can anyone answer? What will happen if we mix both the name? India and Bharat? Can anyone? Can anyone? Indus? It's Indi Bharat or India Rath. It's like a tongue twister. India Rath is better. So why not we debating on that point? Why we want to change the name? Change the name. Okay. Now I would like to inform our judges that discussion is over. We now move forward with rebuttal round. So I would like to inform them to kindly refer the evaluation sheet number 2. Question 1 from Team Bharat. Ms. Tamanna. Namaskar, honorable judges, debaters, and audiences. Thank you for coming here. All right, like my co-debater mentioned, what is in the name? You rightly mentioned it. You provided us with various translated terminologies for the name India. One of them is Bharat. Like you said, what is in the name? Then if you're reclaiming the name Bharat, then where's the issue? Opposition to a name imposed upon a nation by the colonizers is but natural.
Ceylon to Sri Lanka, Burma to Myanmar, Siam to Thailand. If these nations could change the name, then why not Bharat? Where lies the challenges, and how would you justify not reclaiming the name Bharat? Thank you. Thank you. Namaskar everyone. Thank you Tamanna for your question. Okay, first of all, I would like to correct your statement. As you said, as you mentioned the word reclaim, the literal meaning of the word reclaim, to take back something which has been lost. And here we are discussing about the term Bharat, which has never been lost. Now, I would like to answer your question in 3 pointers. Firstly, each and every country have its own diversity, own religion, own culture. So comparing our own country to others, then what you said, if these country can change the name, why not India? So comparison is not the basis here. Secondly, changing the name of the country can also have some negative impact. For example, when Rhodesia changed its name to Zimbabwe, it faced international isolation. This is a negative impact which we can also face. And lastly, why are we even discussing this point? Don't we have any legit point to discuss? We have far more major issues to discuss, to address, to combat, like poverty, economy, health, unemployment. Why not these points? I don't believe discussing changing the name is major issue right now. Thank you, guys. Question number 2 from Team Bharat, Ms. Devangshi. Namaskar everyone. My question to the opposition is, we are referring our nation as Mera Bharat Mahan, Bharat Mata Ki Jai. And as you have quoted that international recognition is challenges, then G20 summit itself highlights the value and importance of Bharat. However, when time has come to move this colonial past, why we are disagree with claiming our identity as Bharat? To answer your question, why there was no problem when we called ourselves Bharat? Kyunki we didn't write it Bharat in Hindi, we just wrote Bharat in English. Bharat was always written in the international documents, all the diplomatic treaties and negotiations that have already happened. Bharat, in President of India, always, right now I gave the example of India and Greece joint statement, right? Indian joint statement, Greece and President of India. So it was President of Greece and President of India. Below the President of India, it was Bharat Ganatantra Rashtrapati. अगर अब उस भारत गणतंत्र राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख भी देते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम है? यही कहना चाह रहे हैं ना कि अगर इंडिया और भारत, आप भारत को रिक्लेम करने की बात कर रहे हो, क्यों करना है? ऑलरेडी है. हम बस हिंदी और इंग्लिश, समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर, उसके लिए लोग हमें क्वेश्चन क्यों करेंगे? दैट इज द थिंग. Question number 3 from Team Bharat, Ms. Siddhi. First of all, the medium of debate is English. So, as you said that Bharat or Hindi kind of translation. So we can also write India in Hindi also. So why can't we write Bharat in English? That is BHARAT. Okay. And as you said regarding the global recognition, India has already recognized on a global aspect in many ways, and India has a stand on globally. So constitution is for our citizen, right? And India, only 2 to 3% of people speak English. So why can't we prefer Bharat instead of India? That is Bharat, that is India, not India, that is Bharat. That is our proposition. Thanks. Now the ball shifts to another team. Question number 1 from Team India.
पहले to answer what she said, आप अगर कह रहे हो कि उसको प्रेसिडेंट ऑफ BHARAT लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसे भारत गणतंत्र राष्ट्रपति लिखो ना. Why is it इस प्लेट पे आप क्यों लिख रहे हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आप लिखो भारत गणतंत्र राष्ट्रपति. तब हम कह सकते हैं कि हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही है. Everybody is accepting that हिंदी जो हम कल्चर की बात कर रहे हैं. Only about whether it is India or Bharat and not about कि president को हिंदी में लिखे or in English. अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं? Yeah, your contentions is going in different level. So yes, I'll make it very clear. My contention might be going in a different level as to your understanding. Firstly, as to your understanding, it might be going in a very different level. But what I'm trying to prove here is that you talk about culture, you talk about belief, you talk about bringing back the rich heritage. If you're talking about rich heritage, let's talk about language here, because everything is about language. Let me finish, then I'll allow you to speak. Let's talk about language. Okay. Firstly, I want to say that you talked about Greece and India, and you also talked about President of Bharat. All these things are taking place in past few months only. It's not about from long time we are accepting it. Only today, like just past few 6 months ago, or like not even 6, I should say. Like from past 3 months ago or something, we are using the word Bharat. Let me make it very clear, in past, from last 75 years, we were just using it as a translated word at international level. You are talking about any UN assemblies, or you are talking about any diplomatic summits or anything. Nowhere the word Bharat, either in Hindi Lipi or in English only, it was written. Let me make it very clear, from past 3 months only, when the G20 summit happens, that time only, just I'll take 3 seconds. The invitations were sent as President of Bharat. That's what the only time when our country was recognized as Bharat at such an international level. Not in past. I would like to make it very correct, very clear for you. Thank you so much. Okay, to accept what you said. The thing, why are we debating this actually? Everybody knows why we're debating. It's not about culture. It's not about heritage. Our country has far more bigger problems, as my speakers said. Recently, we are all aware that Congress and the other parties have created a coalition called India. And the ruling party, BJP, let me be very clear here, have suddenly started this term Bharat. Let me remind you, till yesterday or the previous election, their slogan was Shining India. How are we suddenly moving to the debate of President of Bharat? You know, if it is just a political dimension, that could affect 136 crore people. 300 crores is a small amount, but 14,000 crores for a nation is a big amount. It makes 10% of our revenue, guys. Our taxes, our money. Why not get food for it? हमें इस नाम बदलने से मिलेगा क्या? क्या हमें कपड़े मिल रहे हैं? मकान मिल रहा है? इतनी बड़ी problems हैं. What are we fighting here for? All right. To point out here, first of all, this is not the format of the debate, but I'd like to mention. Fighting. Yeah. We are not fighting. We are just debating. We are just definitely discussing. not fighting. Yeah. Okay. All right. So to point out that we have further more important issues. From a recent internship, I got to know that the government has been putting in funds, has been allocating funds to various missions. Now, I'll name a few that were mainly female-oriented, but yes, there are many. So, Mission Samarthya, Mission Shakti, Mission Sambhal, and many more. So, we are actually focusing on the issues that are important, like poverty, like illiteracy. So, we are putting an emphasis on that. And all right, so it's very important to point out here that India is on the verge of becoming a world leader. We might even say that we are one, proudly. Okay, thank you, Tamanna. We were the first ones to be on the south pole of the moon, Mission Chandrayaan. Yes. You must all be aware. Then we also did Mission Aditya, L1. I hope the audiences are well aware of the facts. Then this name Bharat is associated with the emotions of 1.3 billion Bharatiyans. It is very essential to note here that Bharat word is deep rooted in our values and culture. Our values give us a way to lead our life. If we are rooted to our values, we can lead a life that we wish to.
So if we're claiming Bharat, or rather, like you pointed out, we are not reclaiming it. I put it as a word reversion, which is very important to point out here. Then where lies the issue? Thank you. Okay, now if you all are satisfied with your rebuttals and re-rebuttals, we can start with the second round of question. First question from Team India. Good afternoon to one and all present here. My question to the opposition team is that we believe that changing name India to Bharat will We believe that changing name to Bharat will be taking one step forward but two steps backwards. So can you please clarify that the current priority to change the name of the nation officially when it is already being mentioned and recognized by our constitution? Are we really in a position to get into this name game, or should we prioritize the other problems of our country? Hello. Thank you for the question. I really don't understand that how it is taking us at two step back. I really don't understand just a name can take us two step back. And especially for the name which we are proud of. We are proud of our Bhartiyata, and you think that changing or changing just our name and not even changing, taking back our original name can take two steps backward. And then, I want to make it very clear, you talked about there are many problems in our country. I agree. There were many problems in our country, but now these problems are getting depreciated day by day. You should know the schemes, the midday schemes, the Shakti schemes, the Ujjwala Yojana, the ISRO mission, and the schemes are endless. Even like I can't even describe in a one go how much schemes our country is having right now to eradicate poverty, to eradicate literacy, and many other problems in our nation. So I truly don't believe that we are going to step backward. And secondly, you talked about cost, like 1400 cost. This 14,000, this source is not reliable. An IP lawyer from South Africa just evaluated this cost. So I don't think it is much reliable because we are law students and we work on facts. So I don't consider it. Secondly, last thing, I want to make it very clear. For example, we are having our house. Almost half of the nation or most of the nation belongs to middle class or lower middle class income. So it is very feasible for a person to have a rented house, but still that person wants to have their own house, irrespective they are paying loans or interest for lifetime, because that house gives them sense of belongingness, sense of power, that this house belongs to me. Same goes with the word Bharat. I want to ask from the audience, do you feel Bhartiyata and the word Bharat gives you sense of belongingness? So it should be Bharat, right? Thank you. Okay. You said that 14,000 crores estimated amount hai. I'll give you, NCRB has quoted the amount of changing Allahabad to Prayagraj as 300 crores. Small city, not even big, small city. Now we're talking about nation. We're talking about changing international documents. We're talking about changing all the documents that are there in India. Do you really think it is necessary? It's just a language. It's just a medium of communication. If you want to really change the British education system that you can. You want to follow, you want to talk about names, change the British education system. Go back to the system where we were taught everything. Why are you following the British education system right now? And talking about policies. You said policies are there. Everybody knows policies are there. I'm talking about the resources that will help those policies to reach those people. I am not talking about policies here. Why even we are using English as a medium? Use Hindi then. It's not about language or religion or anything. It is. It's really not. Like we correct. Like you said about the cost and about the effects of changing the international documents and everything. All right, so one suggestion, rather to an answer to your question can be, why don't we take it as a prospective effect rather than giving it a retrospective effect? A well-known example is the three new laws
rather, I would say, 3 new statutes that we have just come. The CRPC, CPC, and Indian Evidence Act were changed, amended, and the names that now have come are Bharatiya Dand Sahita, Bharatiya Nyaya Sahita. All right. So the point here is, why don't we give it a prospective effect rather than giving it a retrospective effect? That will not harm your costs, and we are putting in funds already, right? We have our issues, I agree to you. We have to sort them out, I agree that as well. But if this particular issue can, connect to the 1.3 billion emotions, then where lies the issue? Then I would like to really point out here that it's very essential to note, not everything has to be evaluated on the name of economical worth. Here the emotional worth is also connected. Thank you so much. As the Guys, speaker, आज हमें पता चल गया कि नाम में बहुत कुछ रखा है. What is in the name is truly we can answer to it in this debate. ma'am, Question as the number speaker, two? no ma'am, not the question but the answer. Okay, as the speaker mentioned that we are emotionally connected to this name. Okay, we are emotionally connected, right? Now the question arises, as you mentioned, 1.3 billion population of a country. Did you ask what they want? Did you voted? Did everyone tell that they told us that, okay, they do want the Bharat to be conversed? Basically, as a secular country, it's not a Hindu country, basically, if we say. अगर आप बोल रहे हो कि हाँ भारत को करना चाहिए क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड है, then why not Jambu Dweep? That is also emotionally connected because it is already formed in Bharat itself. ये तो कहीं बाहर से आया भी नहीं है. Why are you using English? Why are you wearing suits and all? That is also from Britishers itself. Everything, we can't claim just an emotional factor or a factor that Bharat होना चाहिए क्योंकि India as a nation, क्योंकि ये Hinduism को represent करता है. It do. हिंदुस्तान क्यों नहीं है फिर? अल हिंद क्यों नहीं है Let me end it. Okay. There are many names. Why only Bharat? Does anyone did anyone ask the Indians or the Bharatians during the time when Britishers entered and they gave us name India? Did Britishers ask us that it should be India? We are Bharatians. We Are call you ourselves questioning Bharat. the constitution makers? No, I am not questioning. You are. I'm okay. Let me come to constitutional You debaters are, also. directly you are. The constitutional debaters. Okay. Because you are questioning the constitution makers, they put it the both name Bharat and India. What is the issue? I guess you are unaware of the debate that happened that time. Let me complete it. Please. The parties or the debaters who supported the contention that India should be the name, they said only for the recognition for short time, because that time our country was not having any economy, Why no after GDP, 75 nothing. years? That time our country was in Mahima. need of India Mahima word, and, not now. Kanchan, Thank you. let's switch over to question number 2 from the team India. Guys, are you coming? Question 2. The question number 2 is, you said that, emotions are very important. Do you really think our country is ruled by emotions? Or is it ruled by facts, stats? What is it ruled by? Emotions? It is not. Kindly answer. It is kindly ruled answer by... in a minute. Only a minute. Okay. It is, the question, you first justify, how are you saying that it is ruled by emotions? Please take care of time. Okay. So it's not emotion. I won't take a word emotion. I will take word culture. I will take word history. You Our culture is our specifically mentioned emotion. emotions. No, you can't go back to reverting or changing what she said. Let her answer. Let her answer. Okay. Okay. You just have a minute. Okay. So the word emotion is not only the single word. When we go to watch a cricket match, we get so excited. These are our emotions. When we go to watch our traditional songs, traditional dance, when we signify G20 as a... Okay. Yeah, we are excited for Bharat as well. We So, are excited for both.
Yeah, Right. we are. I'm not disrespecting the name India. No, I'm really not disrespecting the name India. But now our country is in the need of Bharat. That's all I'm saying. Please don't Thank you. forward the direction. I'll just take a second. That it's emotion is not a single word. Our cultural heritage, our demand, our justice, everything involves in emotion, and India is recognized by its rich cultural history. Thank you. Mahima, thank you. You have a third question. Question number 3 from the Team India. Now, best argument will lead us to a conclusion that secures the indomitable spirit of our nation. Who, no matter who wins, our nation's identity stays intact. Question number 3 from the Team India. Good afternoon, everyone. My name is Pragya, and I stand against emotion. Okay, first of all, let me clear one thing. Language is not a medium. We are here communicating, okay? Through any medium. We also use hand gestures and everything. So we can communicate through any medium, okay? So there is no issue regarding language. And now my question is, Abhi, just Mahima, you said emotion. Now and Pragya, yes. I will request you to just ask your question so that they can answer. When you're talking about emotion, you're saying cost is not important. Why do you think cost is not important? 14,000 crore. Okay, this is estimate amount. But इससे मतलब कम भी नहीं होगा, ज़्यादा ही हो सकता है. You see the cost for Allahabad, 300 crores. And you also answered, only one. You answered about cultural significance. When there was name Bharat, there was only Hindus. Now, at the time India, there are also Anglo-Indians. There are also other religions. Parliament में Anglo-Indians की 2 seat भी है. Please comment. So as you said that the word Bharat, I'll just take 1 minute. As you said that when it was Bharat, only Hindus were there. It is not right. Before Britishers, it was the land for Mughals. And before them also, it was the land for Portuguese. And before that also, many invaders came to India. It was not first time when Britishers came. So the word Hindu is represented by the word Hindustan, not by Bharat. It's really not by Bharat. Clearing the point, it's not, Bharat doesn't relate like from any point of view to just Hindu. Because this language, only it's all about a language, right? Secondly, Thank you, Mahima. just cost thing. So the 300 crore thing that you talked about Prayagraj, it's also not a reliable one because even still the Allahabad High Court is still Allahabad High Court. Okay. Okay. Now Thank you. the evaluation ends here. I would like to inform our judges. The evaluation part ends here. Now the floor is open for the audiences to please ask any of the questions to anyone. Even our faculties, our judges can also answer or clarify your doubts. For this, you have a surprise. Namaskar everyone. My name is Bhavya Jain. I'm from Modi School. So my question is, अगर हम लोग इंडिया से भारत Please clarify whom you are asking this question, Team India or Team Bharat? टीम भारत. Okay. अगर हम लोग इंडिया से भारत कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करने पड़ेंगे. जैसे टीम इंडिया ने बोला कि ये इसमें रिलीजन वगैरह भी अगर हम लोग आज के प्रेजेंट में देखें तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है. जैसे मुस्लिम लोग बोलेंगे कि ये हिंदू पे रूट आ जाता है पूरा कि भारत पूरा हिंदू पे. तो आप लोग कैसे बोलोगे कि तब वो कैसे रोकोगे?
क्योंकि ये तो फिर मतलब हो जाएगा कि ये पूरा हिंदू पे मुस्लिम भी पार्ट है और क्रिश्चियन वगैरह सब पार्ट है, इंडिया में नहीं होता बस. I recently only explained in my speech also that it is not based on any religion, and in last question too. But I want to make you very clear, it is a secular country and there are approximately more than hundreds of languages we are following, and we should accept each and every language. And if a Muslim is there, that Muslim should respect a Hindu culture. If a Hindu is there, that Hindu should respect a Christian culture. If we are, you are in school, you know Zilla, you know Tughlaq, you know Tehsil. These words are Urdu, right? And if I am a Hindu, I can't question that why you are taking a Urdu name, why you are keeping a Urdu name, right? These languages are official languages. Try to understand the difference between religion and language, and respect every religion and every language. Thank you. Some points. Do you know what the term Bharat means? Phrase-wise, it's Bharat. Bharat is a sensation. Rata defines the rhythm and music. So in the words itself, it is not mentioning or defining anything that it is connected to Hindu or any religion. So how can you question that thing? Thank you. Any other question? Ma'am. Muskan. Here. Okay. Namaskar everyone. My question is to Team India. You stated that it is 10% of India's GDP, the cost revenue, the cost engine. So can it be considered as investment for like next thousands or thousands years to come? We're not against development, we're not against growth. But what we are trying to prove here is that we are the third largest economy right now, and we're not fully developed to take such steps. These steps can be taken, but I am talking about the risk that comes with these steps. My friends here have given very good examples of many nations. They say that many nations have changed, but we are talking about a population that is leading the world. We are talking about population that is number one. We're not talking about Myanmar, we're not talking about Sri Lanka, we're not talking about Chota, we're talking about India. 136. Exactly, you said, nahi, but no, you can't. I'm speaking right now. You can't. Ma'am, while the other party was answering, none of us spoke. So I think they should respect that much decorum should be there. Thank you. Next question. Hello. Okay, one from the end. Ma'am. Yeah. Good morning. First of all, I would like to appreciate each and every speaker here because I have thoroughly enjoyed the debate. So many congratulations to each and every speakers. So first of all, I would like to give an opinion of mine which I have in regard of this matter. As we all know that we have a lot of the epic grunts which we all call it, and Mahabharata is also one of them. In Mahabharata, it is mentioned that Bharat was the name there. So doesn't ये ऐसा नहीं लगता कि हम हमारे सिर्फ ओरिजिन्स को ही वापस जा रहे हैं, हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम हमारे जो रूट्स हैं जो हमारे पहले एग्जिस्ट कर रहे थे हम उनको वापस जा रहे हैं. दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है इज फॉर टीम इंडिया दैट I want some more clarity that what our constitution says regarding this matter. Because what I have studied till now, the article 1 of the constitution says India, that is Bharat. This is merely a translation which we are being carrying forward from a long time. Is there any need of this translation? Because Bharat can be written in Hindi as well. And if we talk about that, it will lead to a confusion like in the international era or in the international matter. We have seen that G20. And there was no confusion in the mind of any country when it was written there at the dice that India, the president of Bharat. So what are your views on the constitutional matter, and has there any constitutional bench is constituted for this amendment that is going to be made in the constitution? That is my question for you. Firstly, I would really want to clarify this point. As you said,
that in our constitution it is mentioned clearly that India as a Bharat should be a union of state, right? In our constitution itself, that is Bharatiya Samvidhan in Hindi, it is properly written, if you have like agar aapne padha hai to, that is Bharat अर्थात India राज्यों का संघ होगा. What is this then? If you clarify it that Bharat अर्थात India राज्यों का संघ होगा, that too, now I would like to conclude in 2 Supreme Court proceedings. Our Chief Justice C.S. Thakur mentioned this thing with proper lines that you want to call it Bharat, go ahead. If you want to call it India, go ahead. Are you questioning our Chief Justice or our Supreme Court itself? But it is already mentioned. Even our Supreme Court also had this judgment over this. Then what is the question now? Okay, Kanchan. Thank you. Next. Good afternoon, everyone. My name is Aditi Agrawal, and my question is to Team India. That name holds a very big significance, a great significance on our lives, and it is the basis of our recognition. हम future में कैसे जाने जाएंगे? It holds that thing. तो अगर मेरा जो नाम है कि अदिति है, वो इंग्लिश में भी अदिति लिखा जाएगा और हिंदी में भी अदिति ही लिखा जाएगा. तो अगर आप ये स्टेट कर रहे हैं कि मेरा नाम इंडिया इंग्लिश में लिखा जाए और भारत हिंदी में लिखा जाए और उसी से हमको आगे रिकॉग्निशन मिले, तो वो कैसे जस्टिफाइड है? अगर नाम रह रहा है एक चीज़ में, तो अगर इंडिया है तो इंडिया इंडिया में लिखा जाए, और भारत है तो भारत को इंग्लिश में लिखा जाए और भारत को हिंदी में लिखा जाए. और उसको चेंज क्यों कर रहे हैं हम कि इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत? I would like to request our judges if they can just shed some light on this question. Hello. Your question is, Bharat should be pronounced as Bharat and India should be pronounced as India. There should be no difficulty in this term. But सवाल ये है कि जब 2 सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट हो चुके हैं, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा पॉइंट है. 2016 में और 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई प्रोनाउंसमेंट कर चुकी है, तो क्या ऐसा रीनेमिंग करने से या एक के बदले में दूसरे एक ही स्थान पर भारत यूज़ करें और इंटरनेशनल स्फीयर के अंदर इंडिया की जो ट्रीटी हो चुकी है उसको कैसे बदला जाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. और इनका जो एक बड़ा क्वेश्चन जो आया है कि इसके अंदर बहुत लॉट ऑफ मनी की आवश्यकता पड़ेगी और ये लॉट ऑफ मनी अपन रीनेमिंग में करने में यूज़ करें. इससे अच्छा है कि अनएम्प्लॉयमेंट और जो भुखमरी, पावर्टी और हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटी इसके अंदर यूज़ करें, तो दैट विल बी फार फार बेटर. दैट्स वाई इसका नाम ही है नेम गेमिंग. आज के डिस्कशन का नाम ये नेम गेमिंग. क्या ये इसके भुलाव में अपने को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? केवल नाम चेंज करने से ही समस्याओं का अंत नहीं होगा, मेरा ये मानना है. हाँ, आप क्या कहना चाहती हैं? यस यस प्लीज, यू प्लीज से. यस यस मैडम. ओके. यस यस. Okay.
You are right. तो इसका मतलब तो इस पर रेफरेंडम होना चाहिए आपके हिसाब से, रेफरेंडम होना चाहिए तभी जाकर के इसका नाम चेंज हो सकता है. रेफरेंडम और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके ओके, थैंक यू. Thank you, sir. Ma'am, are we supposed to take more questions? Yes? Okay. Okay, one from here and other from... Namaskar everyone. So my question is from Team Bharat. As you have mentioned about emotions, कि इंडिया इमोशन से चलता है या भारत इमोशन से चलता है, मुझे नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई वांट टू आस्क कि भारत के प्रधानमंत्री या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इमोशंस के टाइम मणिपुर को क्यों नहीं देखा? फिर खालिस्तान, पंजाब में खालिस्तान हो रहा है, उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकला? फिर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं निकला? जहांगीरपुरा में बुलडोजर चलाए गए, तब वहां के लोगों के घर के नहीं जा रहे थे, वो लोग सड़क पे नहीं थे तब. But my dear, we are not here supporting any particular party or the Prime Minister. We are supporting the name. So how can I answer your question? But BJP party ही तो भारत ला रहा है. No. Bharat Jodo Yatra. What was Bharat Jodo Yatra? That was from Congress, right? This is not a political agenda. This is not a political agenda. Bharat Jodo Yatra. The very Supreme Rahul Gandhi pointed out that. Exactly. And even during the time of Congress government also, the bills were like the government always talked about the word Bharat. It is not about political agenda, and we are not supporting any particular party. Let me clear you very well. I agree with your decision. I agree with your contentions that these issues are very important. So I hope government will work on it. I am not supporting any government, or my teammates are not supporting any particular party. Thank you so much. I am also not supporting any party. You pointed out, that's why I am answering you. मेरा सब यही है कि 10 साल हो गए बीजेपी को, तो तब से याद नहीं आ रहा था कि भारत नाम कर देते हैं. Thank you for the question, but like my co-debater clearly mentioned that we are not involving the political aspect. Also, like you pointed out the emotions, I would like to state here, everybody knows the 75th Independence Day it was very close, right? And there we had Har Ghar Tiranga, right? Even the poorest of poor had a flag on their house. That is where India is connected to emotions. Bharat is connected to emotions because the person could not have afforded anything else. But when it came to the flag, our national flag, they had put it on their houses. So yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Is asked from us, so we are the only one who can answer. She just answered. She just answered. This is never-ending debate. But they said they're not representing time limits. They said they're not representing any political party. We have to हमारे पार्लियामेंट में बैठे कौन है आज की तारीख में? I just have one question. You're not representing a political party, but who's sitting in the parliament right now? Who's sitting in the parliament right now? Who is sitting in the parliament right now? Not the opposite party. Okay, please maintain the decorum. Please, I would request. That is okay. Thank you so much. India is Bharat and Bharat is India. Okay, we end here. Yes. Okay. Okay. I'm so sorry, Sneha, but we have to take this question from her. She can answer. She can answer your question, and you ask. Namaskar everyone, I'm Shambhavi Singh from grade 12th and my question is to Team India. You just stated that this is not a political agenda, but you also stated that political parties are using India as the name for their alliance. You also stated it as a matter of fact and a matter of pride. Do you really think it should be that way? Because these same political parties keep on changing their agendas according to their own advantages. आपने बोला नाम बदलने से मकान पानी बिजली नहीं मिलता है, तो क्या यही
पॉलिटिकल पार्टीज जो एक नाम को एज अ वोट बैंक यूज कर रहे हैं, उनको वोट देने से क्या मकान, पानी, बिजली मिल जाएगा? Please, may I know your name? Shambhavi Singh. Okay. Very nice question, Shambhavi. Anyone wants to answer? Or I can just ask a distinguished guest to answer this? Yeah. It will be answered soon. Huh. Ma'am, if you would like to. Hi, Sanvi. Thank you for your question. Shambhavi, sorry. Thank you for your question. So, we are not against any political party, not they. We are just discussing the cost. You know, we already discussed about the cost. Cost for changing the name of Allahabad was 300 crores. You see? And cost... अभी बोला इंडिया का नाम लेके कि पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग इंडिया एज द नेम ऑफ देयर अलायंस, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी का ही सपोर्ट हो गया ना. अगर इमोशंस इंडिया से है, भारत से है, तो बाकी नामों से भी हैं, ठीक है. पहली बात, जम्बूद्वीप जो बुद्धिस्ट और जैनिज्म उनका भी नाम है, उससे भी इमोशंस हैं. और पॉलिटिकल पार्टी इंडिया नाम रखा, उसके बाद ये डिबेट चालू हुई. वी सेड दैट. उनने जब बोला कि G20 के बाद इंडिया डिबेट चालू हुई, हमारा आंसर क्या था कि ये डिबेट कहाँ से चालू हुई? जब उनने पॉलिटिकल पार्टी नाम इंडिया रखा. हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे या फिर हम उसका वो नहीं दे रहे. और जहाँ तक की बात आई आपके वोट देने से खाना, पानी, बिजली मिलेगा, इट्स नॉट लाइक दैट. वोट आप ही डिसाइड करते हो. वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट. वो कॉस्ट जो इम्प्लीमेंट हो रहा है नाम चेंज होने से, उससे क्या होना चाहिए? उनने बोला स्कीम्स है, आई अग्री स्कीम्स है. इम्प्लीमेंटेशन, कॉस्ट किस में ज़रूरी है? इम्प्लीमेंटेशन. यू आंसर मी वन क्वेश्चन. एक आदमी घर आया पैसे कमा के, उसके बच्चे खाना देना है, पैसे मतलब खाना लाना है उनके लिए, बुक्स लानी है उनके लिए, घर बनाना है. और नेम प्लेट पे क्या है? उसका नाम है और सरनेम है. वो पैसा लगाएगा सरनेम हटाने में? यू आंसर मी दिस. वी आर हियर, डिबेट इज नॉट अबाउट इंडिया और भारत. डिबेट इज अबाउट ऑलरेडी इंडिया और भारत तो है ही. यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाम इंडिया, इसको हटाने की डिबेट चल रही है. आपने अभी बोला. No, this is not a issue of replacing. It's about formally using. Yeah. Okay, now I think everyone has got the chocolates for their answers. Speak. Namaskar. Okay, whom you want to answer you? Team India? They have only a minute. Colonial baggage, right? Okay, so you think the name India carries the colonial baggage. So for the past 75 years, what is the goodwill that you have built as a nation? Nothing? Nothing? It is about the goodwill. India as globally recognized. India has built a goodwill over 75 years. You're telling me to compromise that goodwill just over a name? Just over anything that is not important? My opponent, my panel already said, नाम है इंडिया भारत. फॉर्मली बुलाने से what is the मतलब I'm not saying कि आप बुलाओ मत बुलाओ. I'm saying need. अभी बुलाना ज़रूरी है. आप बताओ, आपको अपने घर में सामान चाहिए. How can you guarantee it? I'm talking about the guarantee. मैं बताती हूँ. G20, you're talking about G20. Okay. इसका एक second. I'll give you a very good example. Zimbabwe, हमको सबको पता है. Everybody knows about Zimbabwe. Rhodesia it was formerly known as Rhodesia. ठीक है. Zimbabwe, when it started being called Zimbabwe on the international platform, it suffered international isolation. ठीक है. What is international? I'm not talking about being isolated. I'm talking about the gap that was created. Trade and commerce decreased. Tourism decreased. Why did it decrease? Because documentation में नाम change करने से.
तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि अगर आप इंडिया का फॉर्मली नाम भारत करते हो तो हम अभी अच्छा खासा चल रहा है, वी ऑलरेडी थर्ड, हो सकता है इन द कमिंग ईयर्स विल बी फर्स्ट. सो आर वी सपोज टू फेस दैट इंटरनेशनल आइसोलेशन एंड रिस्क आवरसेल्फ, रिस्क दोज पीपल टू दिस? Okay. Okay, thank you everyone. Ma'am. This is never ending. This is never ending. Ma'am, I will not ask a question, but just put a point. I'm so sorry. Now, you are just giving your opinion. We are not taking any questions. We are not taking any questions. We are very short of time. Okay. Okay, Thank you so let me much. put my point then. As the speaker of as the speaker of supporting Bharat said, why Bharat is given second place in constitution. Okay, listen. If there are two people who score first position, will the order matter? So how can the order of India coming first becomes debate? And as the speaker of supporting Bharat also said that Hindi and Urdu both are supported and recognized by our constitution, but so are India and Bharat. You don't write Urdu in official papers, but Hindi language. But we don't go against it. Should we make it a topic too then? And the Sanskrit has came from our ancestors, and it signifies our heritage. So why don't we use it as our day-to-day language then? If we are talking about heritage there, if we are talking about ancestors we here. have to organize another debate for this because this is never ending. Okay. So now it's time for declaration of results. Who? Okay, two more questions. Okay, any two more questions. Hello, ma'am. Okay. I guess you are in first year, so you don't know the lower courts of our nation still works with the language Urdu as well. And I mentioned the words Tughlaq, Zilla and everything. They are in official documents only. So I don't think that we are not recognizing Urdu or we are just recognizing Hindi. We are recognizing everything. And when you talked about Sanskrit, the Lipi, if you know that, the Devanagari Lipi makes a link between Sanskrit and Hindi. So it should be clear to you. Thank you. Thank you, Mahima. Thank you so much. And Ma'am. thank you everyone for being such a nice audience, such a wonderful audience. So active, so excited and full of enthusiasm. I'm so sorry. We are Excuse not me, taking any more ma'am. questions. Ma'am, one last I'm question, so- please. Please, one last See, question. See, now it's time. Ma'am, one last. Please, please, please. Mahima, you can, sorry. Manaswini, you Manaswini. can ask them in the class. क्लास में तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना. Ma'am, just last one Let question. the results be declared. Ma'am, one last, please. Thank you so much. Now I would like to request our anchors and the organizing committee. Thank you. We extend our heartfelt gratitude to the moderator, Dr. Pooja Jain, Assistant Professor, School of Law, and the participants for their arguments. This debate was the perfect example of how the question can be won, but the answers may be as diverse as the cultures in our nation, keeping us unified through thick and thins. It has been a great experience to witness it from our perspective. Now, I'd like to humbly request Sri Ashok Vyas sir to address the gathering. Respected Dean Madam and उनकी पूरी टीम और beloved students, आज जो ये सब्जेक्ट रखा गया है वो वाकई में बड़े इम्पोर्टेंस का मैटर है. नेम गेमिंग, इसमें दोनों बातें छुपी हुई है निहितार्थ के अंदर. क्या यह वास्तव में गेमिंग है या वास्तव में अपने को नेम चेंज करना है? हालांकि मैं अपना विचार व्यक्त कर चुका हूं, क्योंकि इस पर जब 2 सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट आ चुके हैं उसके बाद के अंदर इस डिबेट का अंत हो जाना चाहिए. इंडिया इज भारत एंड भारत इज इंडिया.
अब इसके अंदर जो समस्या आ रही है कि क्या अपन भारत का नाम रख करके और कल्चरल हेरिटेज को और पुराना जो अपना अतीत जो भव्य था उसे वापस लाएंगे, या इसको लाने के लिए अपने को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये दोनों ही बातें अपने अपने स्थान पर सही है, लेकिन इसके लिए बहुत ही जनमानस उद्वेलित भी हो सकता है। इसलिए ओनली पब्लिक ओपिनियन बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। डाइसी की एक किताब भी है, लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन यदि वहां पर है तो इसका नाम कोई आश्चर्य नहीं है कि देर सवेर भारत भी हो सकता है। यदि पब्लिक ने ये चाहा कि नहीं इसका नाम भारत ही रहना चाहिए और इंडिया का जो नाम है वो एक गुलामी की इसमें बू आती है, क्योंकि 200 साल का ये जो कालखंड रहा है, अंग्रेजों के हम अधीन रहे हैं, उससे पहले इंडिया शब्द नाम नहीं था, अंग्रेजों की ही देन है और उसे अपन ने अडॉप्ट कर दिया है और काफी वर्षों तक चला। अब ये डिबेट चली है, तो कुल मिलाकर के इसमें दोनों ही पहलू है और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों पहलुओं पर अपना अपना विचार व्यक्त किया है। लेकिन भारत की अपनी समस्याएं भी हैं और भारत सुप्रीम कोर्ट से भी गवर्न होता है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स भी किया जा सकता है। ये सारी बातों को देखते हुए अपने को ये देखना पड़ेगा कि क्या भारत का जनमानस क्या चाहता है। यदि भारत का जनमानस भारत को भारत के रूप में देखना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और यदि भारत का जनमानस भारत को इंडिया के रूप में और ड्वेल कंट्री के ड्वेल लैंग्वेज के रूप में पसंद करता है तो उसे भी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये नेम गेमिंग वाला खेल है, लेकिन आपका दिमाग जो है पूरा हिला दिया है और आपने इसके ऊपर जो विचार व्यक्त किए हैं वो दोनों ही बड़े थॉट प्रोवोकेटिंग है। इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि इस पर विचार प्रक्रिया ये अनवरत चलती रहनी चाहिए और उसी में से कुछ नया भविष्य निकलेगा। थैंक यू। Now I humbly request Srimati Suman Saharan to address the gathering. Respected dais, respected dean ma'am, respected faculty members और प्यारे बच्चों, जहाँ सर ने अपनी बात ख़त्म की उसके आगे से ही मैं शुरू करना चाहूँगी, टाइम लिमिटेशन जो भी आपका शेड्यूल है उसको देखते हुए, क्योंकि इस टॉपिक पे जो आपकी डिबेट थी वो वास्तव में बहुत अच्छी है। उसके लिए सभी पार्टिसिपेंट्स और सभी स्टूडेंट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ है उसको हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। जो भी हमारे व्यूज़ हैं चाहे वो सही हो या गलत, हमें एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ इस ऑडिटोरियम में बहुत अच्छी तरह से उभर के आई। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली सही या गलत नहीं होती है और इसी रिलेटिव सही और गलत पे ही हम अपनी कोर्ट्स में भी काम करते हैं। किसी भी पर्सन का एक केस होता है, उसका जो कॉज है उसके लिए वो सही है, हो सकता है कि उसके सोशल लीगल नॉर्म्स कुछ डिफरेंट हों, इसलिए जो दूसरा पक्ष है उसकी बात अलग होगी। और ये डिबेट हमेशा चलती है, ये चीज़ हमारी लाइफ में भी हमेशा चलती है। सही गलत का हम डिबेट से रोज़ गुज़रते हैं, लेकिन बस बात यही है कि जो भी चीज़ है हमें उसको हम अंदर से अपने जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसको एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि क्योंकि आप लोग एक लीगल प्रोफेशन से जो बच्चे जुड़ने जा रहे हैं, अदर स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन स्पेशली जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, और उनको आज की इस डिबेट से एक चीज़ सीखनी चाहिए कि कहीं कहीं जब हमारे लिए कोई टाइम लिमिट दी हुई है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जो कंसेप्ट है वो हमारी समझ में आना चाहिए। किसी केस में अगर हम अपीयर होते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए। हम उससे अगर डेविएट होंगे तो हम अपने जिस पर्सन को हम वहाँ पे प्लीड करने आए हैं उसका भला नहीं कर पाएंगे। हम कहीं अगर डेविएट होते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं है।
जो यहाँ कहीं कहीं हुआ। इसलिए हर चीज़ लाइफ एक प्रोसेस है लर्निंग का, हम लोग भी सीखते हैं, रोज़ सीखते हैं। तो इस चीज़ से हमें ये सीखना चाहिए कि जो हमारा स्टैंड है वो उस पॉइंट पर ही होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो अदर पार्टी या पर्सन या जो सामने से बात कर रहा है उसको हमें फुली रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम अपनी बात को बिल्कुल पुरजोर तरीके से रखें, लेकिन दूसरे का भी सम्मान करें। एक लॉर्ड वॉल्टेयर का एक कथन आता है पत्रिका में रोज, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन आपके विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मैं कद्र करता हूं। कोर्ट में रोज जब हम देखते हैं कि एडवोकेट्स अपीयर होते हैं, वो अपने बात कहते हैं और हमें पता है कि ये बिल्कुल केस की जो फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल झूठ है या क्या, लेकिन फिर भी उस पर रिएक्ट नहीं किया जाता। जज हमेशा अपनी कलम से ही जो रिएक्ट करते हैं वो करते हैं। लेकिन तो उसके लिए किसी ने कहा है कि कैसे मैं न एतबार करता उसके झूठ पर, उसने झूठ बड़े अदब से बोला। इसलिए रिजल्ट डिबेट का जो भी हो, लेकिन सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा किया और स्पेशली जो स्टूडेंट्स में से बहुत कुछ टाइम लिमिट के कारण अपनी बात भी नहीं कह पाए, लेकिन सबका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। एक ऐसी इवेंट का हिस्सा बनने के लिए हमें मौका दिया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपको। और आप सभी का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें, एम फॉर द स्टार्स एंड स्काई विल बी योर्स समडे। थैंक यू। Now I humbly request Shri Ravikant Soni sir to address the gathering. मुझसे अभी पूछा गया कि आप भी बोलेंगे क्या, तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अभी मैं बात शुरू करने से पहले, कैरोलस लीनियस नाम का एक आदमी था, कोई जानता है कौन था? कैरोलस लीनियस। यस, ही वॉज ए बोटनिस्ट। और जितने भी संसार में पेड़ पौधे हैं उनका नाम उसने रखा था। तो आज सारे ही कैरोलस लीनियस बने हुए थे कि इंडिया रखें कि भारत रखें। तो उसने क्या है कि बाय नेम, मतलब दो नाम की एक थ्योरी रखी थी। तो हम भी दो नाम रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले रेगिस्तान की पानी विहीन इस जमीन के बीच में मोदी स्कूल जैसा एक फ्लावर आप जब देखेंगे ना गूगल से, बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो इस धरती को मेरा प्रणाम। इसके बाद सामने विराजमान और यहाँ नहीं भी हैं उन सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। उसके पश्चात मेरे सीनियर्स, सम्मानीय मंच को मेरा प्रणाम और प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। कंपटीशन बड़ा टफ था। मेरी लाइफ का फैसले तो खूब किए, पर आज जजमेंट करने में बड़ी परेशानी आई। तो बच्चों, यदि आप में से कोई फर्स्ट रहा, कोई रनर रहा, तो आप निराश मत होना। सब में एक से बढ़कर एक खूबी थी। कहीं न कहीं ये हमारी ही विफलता रही होगी कि हम सही जज नहीं कर पाए, या किसको आगे रखें किसको पीछे।
ऐसा मुझे लगा। तो कॉन्फिडेंस बरकरार रखना, ये डिबेट्स ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। महफिल कभी चुप शांत नहीं रहनी चाहिए। कहते हैं ना कि आवाज़ों के बाज़ारों में खामोशी पहचाने कौन। तो खामोश नहीं रहना, आवाज़ निकलती रहनी चाहिए। इंडिया और भारत पे भी थोड़ी बात करूँगा मैं। ये मुझे नहीं लगता कि कोई लैंग्वेज वाली बात है कि इंडिया इंग्लिश नाम है और भारत है वो हिंदी नाम है। मैं इस पूरी डिबेट में ये चीज़ आनी चाहिए थी, तो मैं निराश हुआ कि इस बिंदु को किसी ने नहीं उठाया कि इंडिया नाम पड़ा कैसे, कहाँ से आया। आप में से कोई बताओ देखें। यस, इंडस रिवर। और वो कितनी पुरानी थी, मतलब इंडस जो सिविलाइजेशन है वो कितनी पुरानी है। मतलब एंशियंट, सबसे पुरानी जो सभ्यता है उसमें इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है। तो एक अंग्रेजों का नाम दिया हुआ वैसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, वो सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से इंडस बना, और अब ब्रंश होते होते तत्सम तद्भव शब्द होते हैं ना जैसे, तो वैसे इंडस वैली हो गया। और इंडस वैली की सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग इंडू हो गए, हिंदू हो गए, सिंधु हो गए। ठीक है, तो ऐसे करते करते कहीं ना कहीं उनको किसी ने बताया थोड़ी था कि इंडिया नाम रख लो। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि भाई सिंधु घाटी में रहने वाले लोग हैं, सोने की चिड़िया जिसके पीछे भाग भाग के आए थे लोग, तो इसलिए उन्होंने इंडिया नाम रख दिया। और इस इंडिया के चक्कर में पता नहीं कितने कंट्रीज के नाम इंडिया से सिमिलर है, पता है आपको, है ना। रेड इंडियन और पता नहीं कहाँ कहाँ, वो इंडिया के चक्कर में नाम पड़ गए उनके। तो वैसे एक बात बताऊं, ये नाम का झगड़ा क्यों है। भाषण देना नहीं आता, मैं तो यूं ही, ये मतलब सबसे प्यारा कोई शब्द होता है ना, वो होता है खुद का नाम, होता है। और ये शब्द ऐसा होता है जो इंसान सबसे कम बोलता है, दूसरे लोग बोलते हैं, होता है ना ये। और वो जब कानों में पड़ता है तो ऐसे, मतलब माँ पुकारती है तो मज़ा ही आ जाता है, और दोस्त पुकारता है, और कोई फ्रेंड कोई, तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये सबसे प्यारी, कर्णप्रिय, कानों में मिश्री घोल देने वाला वर्ड है। और इत्तेफाक देखिए, इसे खुद नहीं रखते। किसी ने खुद का नाम खुद रखा क्या, कोई बताओ। 9th 10th में आते आते थोड़ा सा मन में जरूर आता है कोई कुछ और होता तो ठीक रहता। सब क्या आता है, A to Z बच्चों के मन में आता है कि कुछ और होता तो बढ़िया रहता। आता है कि नहीं आता है, सब क्या आता है ना। कोई है जो ये कहे कि नहीं मेरे मन में नहीं आया। चलो आप क्लास से बाहर चले जाओ। तो सबसे सुंदर शब्द, और उसको भी हम खुद नहीं रखते। एक टाइम ये भी आता है जब हमें अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर वापस जब रुतबे के साथ पुकारा जाता है कि रविकांत सोनी RJS फलाना IAS, तो फिर वापस खुशी होने लग जाती है। और फिर अखबारों में नाम छपता है, कहीं फोटो के साथ छपता है, कहीं मेरिट में छपता है, तो फिर उससे बड़ा प्यार हो जाता है। तो लेट देम स्पीक। अपन क्यों अपना नाम के पीछे लड़ते रहें, क्या फायदा है इसमें। ठीक, अपने को दोनों अच्छे लगने चाहिए, दोनों नाम। इंडिया बोले तो भी हम खुश, कानों में अच्छा लगना चाहिए, और भारत बोले तो भी ठीक। दोनों की अपनी अपनी, मतलब कहाँ से आए। मैं इंडिया नाम आया इंडस वैली से, कितना पुराना नाम है। तो ये है नहीं कि अंग्रेजों ने दिया। और वैसे ही भारत कैसे आया, चलो भारत कैसे आया बताओ। राजा भरत कौन थे।
भारत सबसे बड़ा इतिहास में मौर्य कालीन जो टाइम था उस समय था सबसे बड़ा भारत, ठीक है। उससे पहले या उसके बाद में इतना बड़ा नहीं हुआ। फिर अंग्रेज़ों ने इतना बड़ा किया इसको कि ब्रह्मा और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए वो। खैर ये तो अलग बात है, मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूँ। आप सही कह रहे हो, राजा दुष्यंत और शकुंतला की संतान थी भरत, और जो कौरव और पांडव हैं उनके एंसेस्टर थे वो, और उनका जो साम्राज्य था उसको भरत से भारत बना कि भारत के लोग हैं। तो इसलिए ये क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी ऐतिहासिक विरासत है, वो भी है, ये भी है। हमें उस जगह के नाम से जाना गया क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास के रहने वाले लोग, सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया, इसलिए इंडिया नाम पड़ गया। और इधर भारत इसलिए पड़ गया क्योंकि एक चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए थे, उनका साम्राज्य था भारत। और उस समय बहुत सारे वेद पुराण और जो मतलब काव्य वो सब लिखे गए थे, तो इसलिए उस समय भारतवर्ष नाम लिखा जाने लग गया, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको बड़ा अदब से, और वही बात है, अपना नाम समझने लग गए। तो इसमें मतलब ये नहीं हो कि ये पार्टी पॉलिटिक्स है, मतलब इंडिया बोल दिया तो कांग्रेसीकरण हो गया और भारत बोल दिया तो, है ना। तो अभी बात इमोशंस की आई, तो इमोशंस पे जाना चाहिए हमें। नाम के इमोशन में तो ये कि ठीक है दोनों से जान लो, लेकिन इमोशंस क्या कि पूरी दुनिया कहाँ बढ़ रही है और हम इस भारत इंडिया के झगड़े में पड़े हुए हैं। इस पे हमारे इमोशंस जागने चाहिए, हमारी शिक्षा पद्धति सुधरनी चाहिए, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो दुनिया में आज भी 5, 7, 10 साल पीछे चल रहा है, अमेरिका से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उस पे विचार होना चाहिए। पॉवर्टी को कम करने के पॉइंट पे बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए क्या? तो इस झगड़े में हम ना पड़े, डिबेट के लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस डिबेट के बारे में यूं बैठे बैठे सोच रहा था कि डिबेट भी क्यों ज़रूरी है। डिबेट से ही ये लास्ट में निष्कर्ष निकला होगा कि भारत और इंडिया दोनों रख लेते हैं, कोई एंड नहीं हुआ होगा उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के सामने। तो ऐसे डिबेट्स का फ़ायदा ये है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, और बात को रखे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये भाषण कला है ना, जो बोलने की कला, वक्तव्य जिसको बोलते हैं, ये ना होती या इसमें दम नहीं होता तो इतिहास पता नहीं क्या ही होता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इतिहास का। बाबर नाम सुना है आपने? तो दुनिया में कुछ बड़े विचित्र और प्रसिद्ध भाषण हुए जिसने इतिहास नक्शा बदल दिया मतलब। तो उनमें से एक बाबर का भाषण भी ऐतिहासिक भाषण रहा हुआ है, सुना आपने? क्या हुआ कि बाबर आया कि हिंदुस्तान नाम की एक जगह है और सिंधु घाटी के इस तरफ है, सोने की चिड़िया है, खूब धन दौलत लूटने के लिए काफ़ी जगह है यहाँ। तो वो 16-17 हज़ार सैनिकों को साथ लेके आया साहब, और रेगिस्तान में राजस्थान का जो इलाका है उसमें से उसको पार करके आया, और राणा सांगा से उसकी पहली मुलाकात हुई। राणा सांगा बहुत बहादुर सम्राट रहा हुआ है, उसके पास तोपें थी, हाथी थे, और दोनों की सेनाएं आपस में टकरा रही थी। 3 दिन में बाबर की आधी सेना सलट गई। बचे हुए लोग उससे कहने लगे कि तू बाबर हमें क्या कह के तो लाया था, और आधे तो मरवा दिए, और 3 दिन और रुकेंगे तो कुछ नहीं, तेरा भी पता नहीं क्या होगा, तो वापस चलो। तो बाबर ने कहा बात तो सही है। वो बड़ा निराश हुआ और एक संधि पत्र भेज दिया कि साहब ठीक है, लड़ाई खत्म करो, वापस जा रहे हैं। अब वो भाषण का क्या असर होता है बताता हूँ आपको। रात को वो
हार की निराशा में टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र पड़ी। अब मैं रिलेवेंस बता रहा हूँ कि मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ, बात इस पे होनी चाहिए। तो उसकी नज़र पड़ी कि राणा सांगा की फौज में जगह जगह आग लगी हुई है। तो उसने कोई समझदार को बुलाया कि यार ये क्या है, मतलब आग इस टाइम क्यों लगी हुई है जगह जगह? बोला साहब खाना बन रहा है। तो अलग अलग क्यों बन रहा है? अपने तो एक ही बड़ी देग होती है जिसमें बिरयानी बनती है एक साथ ही, और सब एक ही प्लेट में खाते जाते हैं। मतलब एक बड़ी थाल और एक मटकी, उसी में पूरी पूरी सेना से लट गई। और इधर जगह जगह क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले साहब यहाँ इन हिंदुओं में, मैं इतिहास की बात बता रहा हूँ, मैं किसी धर्म की यहाँ कोई, या चलो अपन सेना ही ले लेते हैं। इस सेना में कई जाति के लोग हैं और वो एक दूसरे का खाते नहीं है। हाथ भी लग जाए ना तो छुआछूत हो जाती है। तो इसलिए हर जाति के सैनिक अपनी रसोई अलग बना रहे हैं, इसलिए आपको जगह जगह आग लग रही है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब खाना खाने में भी छुआछूत। तो मैं जो ये बात कहना चाहता हूं कि मतलब एकता नहीं है, आज भी लड़ते रहते हैं। तो साहब आगे उसके आइडिया आया फिर कि जब इतने लोग अलग अलग खाना बना रहे हैं तो और खाने के नाम पे जो सबसे एसेंशियल चीज है, भूखा मरता क्या न करता, फिर भी वो उसमें भी नाटक। तो इनको तो जीता जा सकता है, अरे वापस कोई विचार कैंसिल, संधि पत्र वापस मंगाओ। तो अब देखो एक चीज और, फिर उसको कि यार फिर भी अपन ये इसके पास हाथीर तोपें, इनको कैसे लड़ेंगे? कि साहब ठहरो एक मिनट। तो उनमें एक किसी को पकड़ के लाए। कहाँ से? राणा सांगा की फौज में से। एकदम सच्चाई है ये इतिहास की। बुला के लाए और पूछा कि ये तो पकड़ तू 500 स्वर्ण मुद्राएं, तेरी तो पुश्तों की, मतलब आगे की 10 पीढ़ियों का इंतजाम हो गया। अब तो बता कि जीता कैसे जाए? तो वो गद्दारी कर गया। 500 स्वर्ण मुद्राओं के बदले नक्शा ही बदल गया देश का। तो क्या बोला कि साहब देखो इनके पास 8 तोपें हैं, 8 तोपें। अब रिलेवेंसी समझना आप कि कहाँ लड़ रहे हैं हम और कैसे फायदा उठा के ले गए लोग। कि इनके पास 8 तोपें हैं, वो इनके पे आ गया, मतलब हमारे पास नहीं, इनके पास। राणा सांगा के लिए बोलता है कि इनके पास 8 तोपें हैं। राणा सांगा का आदमी बोलता है आप एक काम करो, इनके आगे 8 गायें खड़ी कर दो, मरे ही तोप नहीं चलाएंगे, फिर आप जैसे जैसे जीत जाना। तो 8 गायें मंगवाएगी रात को ही पास के गांव से, और उन तोपों के सामने सुबह जब रोशनी हुई तो तोपची बोले मैं तो नहीं चलाऊंगा, गाय मर जाएगी। और वो छापामार योद्धा थे, एक एक करके सुलटा दिया। राणा सांगा की हार हुई और इस देश में, इस भारतवर्ष में क्या हुआ? मुगलों का राज कायम हुआ। और आया समझ में? तो इस कहानी से मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, 3 बातें। एक तो अब देखो यहाँ क्या हुआ कि फिर भी अब सैनिकों को कौन समझाए? तो उसने ऐतिहासिक भाषण दिया, सबको वापस जगह जगह के गाओ बाबर क्या कहना चाहता है। तो तीसरी बात है, उसने ऐतिहासिक भाषण दिया कि देखो शहीद हो गए तो जन्नत मिलेगी, हुरे मिलेगी, भाग गए तो कायर कहलाओगे, काफिर कहलाओगे, और मार दिए जाओगे दोजख मिलेगी, और जीत गए तो ये सोने की चिड़िया मिलेगी। ये पंक्ति थी और इस भाषण ने उसको विजय दिलाई। समझ गए आप? तो इस कहानी से 3 बातें निकल के आई। बोलने में दम होना चाहिए। नंबर 2, ऐसे झगड़े नहीं करने चाहिए
बात किस पे होनी चाहिए? हमारी समृद्धि बढ़े, क्या हमारा विकास हो, डेवलपमेंट हो। और अभी मैं जो कह रहा था कि हम 5-7 साल पीछे अमेरिका से, हमें आगे होना चाहिए था, वो हमें फॉलो करते, उस पे बात होनी चाहिए। अभी भाषण पे एक और कि इसकी लाइन समझ में आई? हाँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, ठीक। मैं आपकी मैम को इसका टेक्स्ट व्हाट्सएप करूंगा। ये सच्चाई है एकदम इतिहास की। एक किताब का नाम है, आपको कहीं मिले, हिंदुओं की 100 भूलें। ये मतलब मिलती नहीं है, कोई रेयरली कहीं से। मेरे पास बहुत पुरानी, मेरे दादाजी के टाइम की पड़ी थी, उसमें लिखा हुआ है, और मैं इसका टेक्स्ट आपको भेजूंगा कि हिंदुओं ने कब 100 ऐसी भूलें की जिससे उनको पराजित होना पड़ा, परास्त होना पड़ा, और आज जो हम सीन देख रहे हैं वो हुआ। नेक्स्ट में डिबेटिंग या भाषण पे ही, मतलब वक्तव्य बोलने का क्या फ़ायदा है उस पर, और आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक लाइन उन्होंने क्या बोली, सब बोलो एक साथ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक भाषण की एक लाइन, सुभाष चंद्र बोस चले गए, ये लाइन कभी नहीं मरेगी। मरेगी कभी? कभी नहीं मरेगी। पता है क्या हुआ था? जब ये भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसा चाहिए, किस लिए? मुझे आज़ाद हिंद फौज बनानी है ना। तो वहाँ जितनी लेडीज थी ना, पहने हुए सारे जेवर ढेर लगा दिया था एक लाइन पे, तुम मुझे खून दो। खून थोड़ी मांग रहे थे वो, है ना। आज़ाद हिंद फौज बनानी थी उनको। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक का सेंटेंस एक साथ बोलो सब। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे, बोलो ना एक साथ, मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ, एक सेंटेंस और आज़ादी मिल गई। रोल है कि नहीं इन दोनों लाइनों का? तो इसलिए जो बच्चे चुप हैं उनको भी बोलना आना चाहिए। पता नहीं कौन हम में से आने वाले भविष्य के लिए सुभाष चंद्र बोस बन जाए, या हिटलर की हाइट ना पता है कितनी थी? 5 फुट के नीचे ही था वो, लेकिन जब बोलता था, उस बोल के पूरा मतलब अपना साम्राज्य बनाया ही बोल के था वो, सिर्फ भाषण देके। और 20 फुट ऊंचा अपना मंच बनाता था। उसको एक साइकोलॉजी थी, किसी ने बता रखा था, हाइट कम थी ना उसकी, इसलिए कि उसको फील होता था कि मैं कम हाइट का हूँ, इसलिए लोग मुझे तवज्जो कम देते हैं। तो उसको ये लगा कि मैं अपना मंच ऊंचा बना लूँ तो लोग मेरे सामने मेरे से छोटे हो जाएंगे। और ये फैक्ट भी है, साइकोलॉजी है, कि जब हम गर्दन ऊंची करके किसी बात को सुनते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि विरोध करने की क्षमता छोड़ देता आदमी, और नीचे गर्दन करके हम स्पीच देते हैं, बात करते हैं। इसीलिए जज साहब का जो चबूतरा है वो सर 3 फुट ऊंचा होता है। तो आपको मेरी बातों में शायद रुचि आ रही है, इसलिए कोई कहने नहीं आया अभी तक कि टाइम हो रहा है सर। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ज़रूर मुझे व्हाट्सएप आया था अभी कि आप जुडिशियल सर्विस से हो तो आप थोड़ा मोटिवेशन भी करेंगे, वकालत भी मैंने खूब की है, तो उसमें भी थोड़ा बच्चों का ज्ञानवर्धन करें। तो ये तो अपनी बात थी, वो रिलेवेंस की थी, मैं थोड़ा सा अब उस पर भी बात करूँगा।
मैं राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से हूँ। नाम सुना होगा, आप सारे लॉ स्टूडेंट हैं तो। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये एक ऐसी संस्था है जो अपने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 की वजह से स्थापित हुई। राष्ट्रीय स्तर पे इसको नालसा बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और स्टेट लेवल पे राजस्थान है तो रालसा, और जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तालुका यानी जैसे अब आप तुगलक बोल रहे थे, वो तालुका वर्ड है एक्चुअली, तो तालुका लेवल पे तालुका विधिक सेवा समिति। हमारा बेसिकली काम होता है लीगल सर्विसेज देना, जिसमें लीगल एड, लोक अदालत, विक्टिम कंपनसेशन और लीगल अवेयरनेस, ये 4 बेसिक काम होते हैं। तो इनके बारे में सुना होगा, आपके क्लिनिक्स होंगे, यहाँ लीगल एड क्लिनिक है ना, तो उसमें आप एक्टिविटीज़ करिए तो आपको इस एक्ट का और पता चलेगा। ये एक तरह से एडीआर मैकेनिज्म के बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड, तो इसमें भी रालसा का काफ़ी रोल है। सारे ही झगड़े कोर्ट में थोड़ी ले जाएंगे, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स, मीडिएशन, ये मैं सोच भी रहा था कि इस झगड़े को मीडिएशन से कैसे निपटाया जाए भारत और इंडिया के, तो वो तो चलो लिस्ट नहीं है ये। मेरा वकालत का अनुभव है, तो आप में से वकालत कौन करना चाहता है ये बताओ आप। और सर्विस में कौन आना चाहता है, जुडिशियल सर्विस? बाकी सारे बाकी क्या करेंगे? लेक्चरर, टीचर, या डिग्री लेनी है केवल? बहुत प्रेशियस डिग्री है ये। क्या सिखाते हैं इसमें? पूरी दुनिया चलती कैसे है, कानून दुनिया को बांधता है ना। तो चलो वकालत के बारे में बात करते हैं। एक वकील में क्या गुण होने चाहिए? क्या बोर हो रहे हो क्या आप? एक वकील में क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जैसे अभी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, इधर से भी चल रहे थे, बच्चे अपने अपने क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट्स रख रहे थे। तो एक वकील का नाम आते ही अपने सामने एक छवि आ जाती है कि वो एक कोर्ट है जिसमें, प्लीज मैम, हेलो, साइलेंस, कई सुनने वाले भी हैं इनमें। तो एक छवि उभर के आती है कि एक कोर्ट रूम है जिसके सामने 2 वकील लड़ रहे हैं आर्ग्यूमेंट करके, यही आती है ना। तो मैं इस पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एक वकील में क्या गुण होने चाहिए, सफल वकील में। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो वकालत की वो एक सफलता के लेवल तक की थी, उसके बाद मैं जुडिशियल सर्विस की तरफ रुख कर गया। वकील में 5 बेसिक बातें होनी ज़रूरी है। सबसे पहले 3+2 का फार्मूला है, फैक्ट, एक्ट और टैक्ट, और फिर ड्रेस और एड्रेस। तो फैक्ट मीन्स कि आपका कोई क्लाइंट आया आपके पास और आपको अपनी समस्या बताई कि मेरा ये झगड़ा है। चाहे एक लेडी आई कि मेरे पति से बनती नहीं है, तलाक चाहिए, ठीक, सिंपल। या कोई भी कि मेरे भाई ने मेरी प्रॉपर्टी दबा ली, या मेरा चेक डिसऑनर हो गया, ठीक। तो उसके फैक्ट वो रख रहा है, वो आपको गैदर करने आने चाहिए। उसको मतलब एक्टिवली आपको लिसन करना है, आपको सुनना है उसको क्या क्या कह रहा है ये, और मैं इसको कोर्ट तक कैसे ले जाऊं, कोर्ट के सामने मैं क्या रखूं, उससे फैक्ट लिए और कोर्ट के सामने कैसे रखूं कि इसको न्याय मिल जाए। तो फैक्ट उसको गैदर करना आना चाहिए। अब मैं इस पे एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पड़ोस के शहर में एक वकील साहब थे, उनको ड्राफ्टिंग नहीं आती थी। तो फैक्ट्स आएंगे, समझेंगे, तभी ड्राफ्टिंग कर पाएंगे ना। तो आती नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि अच्छे 2-4 वकीलों के जो मुकदमे हैं उनको कंप्यूटर पे टाइप कर लिया कि बस अब नाम बदल देंगे, काम फिट है एकदम। तो
उनके पास एक दहेज का मुकदमा आया, तो उन्होंने जो ड्राफ्टिंग सेव कर रखी, सुनिए आप, कि मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़ के सामान दिया दहेज का, जाते ही मैंने सास को संभला दिया, नगदी थे, ससुर को संभला दिए, और फिर वो मारपीट शुरू हो गई, रोज ताना देते, सास मारती, पति पिटाई करता, ससुर ये कहता, वो यूँ एक सेट उसका वो था। तो उनके पास एक केस आया, केस में उस लड़की के न तो ससुर थे और न पिता, ठीक। तो उनको तो नाम बदलना था, नाम बदल दिया। बदलते उसमें ये कि मेरे माता पिता ने हैसियत से बढ़ के सम्मान दिया। पिता जब मुझे पहली बार ससुराल लेने गए तो उनको ताना दिया। किसने दिया? ससुर ने, दोनों ही स्वर्गवासी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कॉपी नहीं करनी है, उसकी बात कोर्ट के सामने सच्चाई की रखनी है। अरे ये पर्चियां नहीं चलेगी। नहीं सुनना क्या? ये लंच ब्रेक का आया है मेरे पास, चलो शॉर्ट कर देता हूं इसको। तो फैक्ट, अब आता है एक्ट। एक्ट का मतलब कि आपको कानून की बारीकी आनी जरूरी है। उसने आपके पास सिविल का केस लाके दिया कि साहब बंटवारा करा दो, और आप उस पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करा रहे हो, तो न तो उसको न्याय मिलेगा न उसको सजा होगी, झूठा तो झूठा ही रहेगा ना। तो आपको कानून की बारीकी आनी चाहिए। तो आप जो अभी टाइम बिता रहे हैं ना, उसको फालतू मत गाओ, जितना कानून आप सीख सको यहाँ कोशिश करो। तीसरा होता है टैक्ट। टैक्ट मीन्स झूठ पकड़ने का टैक्ट। ये नहीं है कि आप झूठ बोलने का टैक्ट सीखो। कोर्ट के सामने क्या लाना है आपको? सच्चाई। वकील आपस में लड़के क्या लाते हैं? जज बेटा ये थोड़ी देखता है कौन झूठ बोलने में ज्यादा माहिर है, उसके पक्ष में फैसला देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये होता ना कि इसमें से जो ये मंथन हो रहा है आरोप प्रत्यारोप का, ये आर्ग्यूमेंट्स का और लॉज का, तो इनमें से सच्चाई क्या है और वो उसके आधार पे फैसला देता है। तो टैक्ट क्या होने चाहिए? सच पकड़ने के, झूठ को दबाने के। तो ये सीखो आप। इसका एक एग्जांपल देता हूं। टैक्ट का मतलब यूं नहीं है कि टैक्ट सबके लिए, अपने क्लाइंट के लिए भी, जज साहब के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए भी, अपोनेंट लॉयर है उसको दबाने के लिए भी टैक्टिस आनी जरूरी है। एक सिंपल सा गवाह के बारे में, गवाह से भी टैक्टफुली आप जिरे करोगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे, तभी तो सच्चाई आएगी ना। तो मैं वकील था, तो मेरे पास एक केस था कि ये दुकान पिछले 6 सालों से बंद पड़ी है और इसमें ताला लगा हुआ है। ये मेरा केस था। वो अपोजिट पार्टी ये गवाह लेके आई कि नहीं, मैं तो रोज ही इस दुकान के सामने से निकलता हूँ, यहाँ से सामान खरीदता हूँ, मेरा तो उठना बैठना भी है, झूठ है। इस बात की गवाही देने आया। तो अब टैक्ट क्या होता है कि आप कैसे उगलवाओगे? तो वकील साहब बड़े उसको रटा रटा के कि देख तेरे को ये पूछ सकते हैं, तेरे को ये जवाब देना है, तेरे को ये पूछ सकते हैं, तेरे को ये जवाब देना। मेरे सामने आए, सीधा एकदम स्ट्राइक किया उसके, तो ताला कितने सालों से लगा हुआ है? बोला 6। निकल गई उसके मुंह से। मैं ठीक है, अब आगे नो क्वेश्चन। मेरे को तो वही बात उगलवानी थी। तो ऐसा टैक्ट आने चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक सवाल है, आपने अपनी पत्नी को पीटना छोड़ दिया, तो इसके चाहे हाँ बोलो ना बोलो, फंस गया ना। नहीं समझ में आई कईयों को। तो फैक्ट, एक्ट, टैक्ट, तीनों में मास्टरी होनी चाहिए। फिर आता ड्रेस। ड्रेस, आप वकील साहब की तरह दिखने चाहिए। आपका एटीट्यूड, आपका व्यक्तित्व, आपका बोलने का ढंग। आपको आर्ग्यूमेंट करने आते ही नहीं, आपको कोई भी पान की दुकान पे ही दबा लेता है, पान खाते हुए ही आप अपनी बात ही नहीं रख पाते, तो वो कैसे मानेंगे कि ये वकील है ना। तो ड्रेस का मतलब केवल कपड़ों से ही नहीं, आपका पूरा बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, बात करने का ढंग, आपकी लैंग्वेज, भाषा। वहाँ गालियाँ निकालने से थोड़ी होगा,
है ना? तो अच्छी लैंग्वेज, अच्छे शब्दों का चयन सब शानदार होने चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये बेस्ट लॉयर है। हरी साल्वे को यूं थोड़ी कुछ भी बोल देता है। और लास्ट में आता है एड्रेस। एड्रेस के 2 प्रोनाउंसिएशन है, बताएंगे कोई? एड्रेस और एड्रेस, क्या फर्क है दोनों में? एक तो पता होता है, यस। तो ये भी दोनों परफेक्ट होने चाहिए। कोर्ट को संबोधित कर रहे हो, चाहे अपने क्लाइंट को, चाहे अपोनेंट लॉयर को। मेरे काबिल दोस्त ने अभी जो आर्ग्यूमेंट दिए, कितना प्यारा बोलता है। अरे ओ, ऐसे तो नहीं बोलते, ये नेताओं के काम है। तो एड्रेस करना आना चाहिए। कोर्ट को संबोधित करते हो तो कोर्ट को लगना चाहिए कि ये माई मैन है, मेरा आदमी कितना अच्छा बोल रहा है और इसने कितना अच्छा रिप्रेजेंट किया है, केस किसी के फेवर में जाए। कम से कम उसका मूड तो आप अगेंस्ट मत करो ना। आप एरोगेंट होके जज के सामने जाओगे तो वो क्या, पहले ही मन बना लिया यार आदमी तो ये एरोगेंट है, तो जरूर कोई फर्जी केस ही बना के लाया होगा। ओके, तो बातों से पेट नहीं भरता क्या? नहीं। तो ड्रेस और एड्रेस भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। अब एड्रेस जो पते वाली बात है, बस वहीं खत्म करते हैं। एड्रेस मीन्स कि शाम को 7 बजे वकील साहब की जरूरत पड़ी, गिरफ्तार हो गया बच्चा आदमी, और उसकी सुबह बेल करानी है। फोन लगाया कि साहब, वकील साहब तो मैं खाने में विराजमान है, तो उनकी वकालत चलेगी क्या? मैं खाना समझते हो? बार, कौन सी बार, समझिए आप? तो उनकी कैसे चलेगी? या कहीं अड्डेबाजी में गए हुए हैं? तो वकील अपने ऑफिस में मिलना चाहिए। तो ये 5 चीजें हैं, इनका ध्यान रखना वकालत करनी है तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you, honorable judges. As the heated verbal combat over the game name India versus Bharat comes to an end, we are in an awestruck situation as to how different opinions can be in sheer contact with each other and yet unified by agenda of protecting the nationality. No matter what the results are, all of us know that each argument presented here was unique, logical, thought through, compelled us to think, and made sure to win our hearts. We congratulate all the participants here. The most awaited moment of the event has come, and we are here with the results. The award for the winning team goes to... Any guesses by the audience? We have quite a diverse view here, I can see that. But the winner is... That's right, that's Team India! Now, the award for the best speaker. Any guesses? It's Arjav Rajvi. Now, I humbly request honorable judges to please come in front of the dais for prize distribution. Now I request Dean School of Law Dr. Hina Patoli and Dr. Preeti Gupta to please come up on the stage for the prize distribution and for the group photograph with the winners. The winning team, please come up on the stage.
Team India, Arjav Rajvi, Pragya Sharma, Kanchan, Raksha, and Sneha. Please give them a huge round of applause. Now the award for the best speaker. Award for the best speaker, Arjav Rajvi. Please come forward. I request everyone to please come together for the group photograph. To recognize the efforts of the hard work of Team Bharat, we would like to call all the participants of Team Bharat on the stage. Tanishka, Mahima, Tamanna, Devangshi, and Siddhi. Please give them a huge round of applause. We request all the participants to please take their seats. We would like to request Madam Dean, School of Law, Dr. Hina Patoli, and Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, School of Law, to present a token of respect and gratitude to our esteemed guests. We request our honorable judges to please be seated. We heartily congratulate all the winners. Now, we would like to request Dr. Neetu Naval, Associate Professor, School of Law, to please come up on the stage and extend a vote of thanks. Namaskar to all present here. What an amazing event it was. Very first, I want to congratulate to winning team and a big applause to the participants. I am standing in front of you today to express my sincere gratitude and admiration for the outstanding debate competition on behalf of the School of the Law, Modi University. Indeed, it has been a thrilling and thought-provoking experience. I want to express my heartfelt gratitude to everyone who helped to make this event a success. I would like to express my immense gratitude to our panel of judges, Honorable Srimati Suman Saharan Madam, Honorable Shri Ravikant Soni Sir, Honorable Shri Ashok Vyas Sir, who spared their time for busier schedule to grace the occasion. Your willingness to be a part of our debate competition as a judge and your gracious presence have made this occasion even more special. My sincere gratitude to Chairman respected R.P. Modi sir. With his blessing and graces, we are able to make this event what it was. Sir, your leadership, your dedication, your direction to our institution's academic and extracurricular growth have been invaluable. Further, I express sincere thanks to our esteemed Dean Dr. Hina Patoli Madam, who has been a source of support and inspiration.
I would extend my gratitude to administration authorities on behalf of School of Law. Thank you for making this event to great success. This debate was not possible without the constant hard work of our coordinator, Dr. Navna Singh, moderator, Dr. Pooja Jain, and special supporter, Dr. Rohit Soni. We are very thankful to having this team. It is our privilege to extend our heartfelt thanks to other school of university who have played a crucial role in making this event possible. I would also like to acknowledge this effort of auditorium management staff have been working tirelessly to ensure the event aspect of our event rare and runs seamlessly. I would also like to acknowledge our teachers and mentors who have played an instrumental role to develop talents and skills of our debaters. I want to express our heartfelt appreciation to our dedicated volunteers who have worked tirelessly behind the scene to ensure the event's success. Last but not least, a big thanks to our school students, audience, and supporters to make this event memorable. Your presence and engagement have added to the vibrancy of this competition. And very thankful to the present media here for the covering this event. Thank you, everyone. Thanks to all. Thank you, ma'am. We thank the organizing committee for providing us this opportunity to host such an enthusiastic and zealous event. We thoroughly appreciate the presence of our dignitaries and audience in making this event a memorable one. Now, we request all of you to please rise for the national anthem. सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय We request all the faculty members to come up on the stage for a group photograph. Thank you so much. We now end the event on a virtuous note. Students can also come for the photograph. There is no restriction for anyone. Rest all may proceed to lunch.